So welcome students. So इस क्वेश्चन में आपको दिया है f of x is equal to x square is a function which is defined in the interval -1, 2, closed -1 to open 2, and you're asked to show that f of x has exactly one local maxima but global maxima is not defined. So you're asked to show this proposition f of x has exactly one maxima. You have to show that one local maxima and global maxima is not defined. Okay, so if you draw the graph of f of x is equal to x square, so this is x-axis, this is y-axis. So we know that f of x is equal to x square is a parabola going from origin, but हमारा graph जो है that's only defined between -1 and 2. -1 और 2 के बीच में मेरा फंक्शन डिफाइंड. सो ऑब्वियसली x इज इक्वल टू -1 पे y +1 आएगा. सो हैव ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड व्हेन x इज इक्वल टू 0 y विल बी इक्वल टू 0 एंड व्हेन x इज इक्वल टू 1 y विल बी इक्वल टू 1. व्हेन x इज इक्वल टू 2 y विल बी इक्वल टू 4. ठीक है, y विल बी इक्वल टू लार्ज नंबर. ये 2 है. So if you extend this, so you have 3 somewhere here, you have 4 somewhere here. So you have x equal to 2 पे the value is 4. ठीक है, so it is defined from closed -1 to open 2. So यहाँ you have a solid dot. So you have a graph like this which goes from here and goes all the way here. But यहाँ जो है the function is defined only up to open 2. So you have hollow dot here. So this is how the function f of x look like. So now what is asked is you have to show that f of x has exactly one local maxima. ठीक, so what is the local maxima? आप देखा तो there is no point at which the differentiation is 0 and you have a maxima. ये point जो है the differentiation is 0, critical point है, but you have a minima here. So what is the point of local maxima? So if you take this point, in the neighborhood of -1 का neighborhood में, if you see what is the value of x at which you have the maximum value -1. So at x is equal to -1, f of x has a local maxima. Local maxima का मतलब है उसका neighborhood में वो सबसे बड़ा होना चाहिए. So f of -1 जो है, f of -1 which is equal to 1 is the highest value of f of x in the neighborhood of -1. क्योंकि -1 का एक तरफ तो डिफाइंड नहीं है, सो इस तरफ देखने का जरूरत नहीं है. सो जिस तरफ डिफाइंड है वहां f of x का वैल्यू सारा -1 से छोटा है. सो at x is equal to -1 f of x has a local maxima. ठीक है, आप सोच सकते हैं f of 2 भी लोकल मैक्सिमा है, बट द प्रॉब्लम एट 2 इज द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट 2. 2 पे डिफाइंड नहीं है, सो उसका नाइबरहुड में किससे कंपेयर करेंगे? सो f of 2, if f of 2 is the greatest in the neighborhood, then we can say that f of 2 is the local maxima, but f of 2 is not defined. f of 2 मुझे पता नहीं है. This is defined on the open interval 2. So the function has only one point of local maxima. And आप देखा तो if I have to define the global maxima, so what is the global maxima of this function? Global maxima is nothing but the maximum value of this function. So what is the maximum value of this function? So we can only say that the maximum value tends to 4. So maximum value is very very close to 4, tends to 4. क्योंकि x इक्वल 2 में आप देख सकते हैं सबसे मैक्सिमम, सबसे हाईएस्ट वैल्यू यहाँ आ रहे हैं. ठीक है, सो एट x इज इक्वल टू 2 इफ द फंक्शन वुड हैव बीन डिफाइंड, अगर फंक्शन डिफाइंड हुआ तो वो वैल्यू 4 पे जाएगा, बट एग्जैक्टली 2 पे तो डिफाइंड नहीं है. सो 1.999999 तक डिफाइंड है, एंड एट दैट वैल्यू द वैल्यू ऑफ f of x इज टेंडिंग टू 4. सो एग्जैक्टली कितना हो रहे हैं मुझे पता नहीं, हेंस the global maxima is not defined because we don't know exactly how much it is. ठीक है, so
we have seen that this f of x has one point of local maxima and global maxima is not defined. अगर यही क्वेश्चन में अगर यहाँ 2 के प्लेस में क्लोज टू है तो द ग्लोबल मैक्सिमा वुड हैव बीन 4, तब यहाँ सॉलिड डॉट आएगा, ये वाला 4 जो है वो ग्लोबल मैक्सिमा हो जाएगा, बट यहाँ ओपन दिया, हेंस ग्लोबल मैक्सिमा इज नॉट डिफाइंड. थैंक यू.